नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. To all Muslim viewers, Assalamu alaikum, and to all foreigners, welcome to my YouTube channel. Today the topic we have to cover, there are three topics. One is symbol, second is valency, and the third is compound. Let's begin. What's symbol? Symbol is abbreviations of names of elements. It is to describe them into singles or double letters. They are known as symbols. I have write some examples here. Hydrogen is abbreviationally described by H, and oxygen is abbreviationally described by O. Sodium is abbreviationally described by Na, and chlorine so far is Cl. Every element has their unique name. Some are English, some are Latin, and some also taken from Greeks. So to describe them, to write them in a short form, these symbols are used. So to describe these every element, there is the abbreviation of symbols used to describe them. That's what we call symbol. Now the question, what is valency? We have studied, we have seen earlier that many atoms and many elements join together. How they join, how they make bond with each other. Every atom, I am giving you here 4 examples. Simply I just describe it here to you. What is valency? Tendency of any element to combine with other element is known as valency. When two atoms joins together, they have tendency, they have some valencies. That's tendency that when they join with other elements is known as valency. For example, I am giving 2 or 3 examples with the help of hydrogen. First one is HCl, hydrochloride. Chlorine has single valency to combine with hydrogens. And in water, HCl, H2O, sorry. Oxygen has double valency. It needs 2 hydrogen atoms to form water, a compound. And in NH3, ammonia, nitrogen needs 3 hydrogen atoms to form that NH3, so its valency is 3. And in methane, carbons need 4 hydrogen atoms to form methane. So that's the quality when they need other elements, need other atoms. That's known in chemistry as valency. They have conditions to form combination. They have conditions to form these bonds. If an element or an atom had single electron in its outermost shell, it needs to give away that, or double or triple, from 1 to 3. And elements having from 1 to 3 electron in its outermost shell, it must lose this electron. And if they have 5, 6 or 7, they must gain the electron to form bond. So that's what they called valency. Now the third topic is compound. We say in our earlier lectures that element is purest form. Substance is also a purest form. But what is element? We said that the element is something that's made up of same type of atom. It's known as element. But when 2 or more elements join, they form a new product. That's what they call compound. They need some ratio to make these bonds. But when the 2 or 3 elements mix up and form compounds, they need a specific ratio to form that bond. But when the new products form, it never had single qualities of these elements. It has its own unique properties. I am giving you here some examples. When hydrogen and oxygen chemically joins by a fixed ratio, they form water. Oxygen is a gas and hydrogen is also a gas. But when they both mix, they form water. That's liquid. Both are gas. They are forming a liquid. That it has its own properties. That's what for the finals. Now, आप सबके लिए
हमने पीछे पढ़ा हुआ था एलिमेंट्स के बारे में। आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सिंबल्स है, दूसरा वैलेंसी है, तीसरा कंपाउंड है। सिंबल क्या चीज है? जब हम किसी भी एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स को जब हम बयान करते हैं तो हर जगह पे उसका पूरा नाम नहीं लिखते। उनको बयान करने के लिए उनके नाम का, चाहे वो ग्रीक हो, लातीनी हो, इंग्लिश हो, पहला हर्फ या जहां पर मुवासलत हो रही है 2 हर्फ, पहले 2 हर्फ वो लगा कर लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास सिंबल। सिंबल जैसे नाम से पता है, अलामत, तो ये एक अलामती नाम होता है, ये उन चीजों को बयान करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन को बयान करने के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है, सोडियम के लिए Na है, और क्लोरीन के लिए हमारे पास Cl है। तो जो सिंबल होगा ये उसका सिंबॉलिक नेम यानी अलामती नाम है। जितने भी एलिमेंट है उनका जो अलामती नाम है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? या सिंबल कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैलेंसी। एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो जो उनकी जो मिलने की सलाहियत है वो हमारे पास वैलेंसी कहलाती है। तो जैसे हम यहां पर बयान कर रहे हैं कि ये वैलेंसी कुछ असूलों की तरह होती है। जैसे अगर तो किसी एलिमेंट्स के बाहरी जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल से कहते हैं, उसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसे 1, 2 या 3 देने पड़ेंगे। यानी कि वो 1, 2, 3 वाला 5, 6, 7 मांग नहीं सकता, उसे लाजमी है कि वो देने पड़ेंगे। तो इसके साथ जैसे 5, 6, 7 वाला होगा वो 5, 6, 7 देगा नहीं, वो 1, 2, 3 वाले से लेगा। यहां हम हाइड्रोजन की मदद से आपको यहां पर शिकार बता रहे हैं कि हाइड्रोजन की एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर। जैसे HCl हाइड्रोक्लोराइड के अंदर हमारे पास ये जो क्लोरीन है, इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है, एक हाइड्रोजन की। तो इसकी वैलेंसी हमारे पास एक, जितने हाइड्रोजन चाहिए, मिसाल हम इसके जरिए से दे रहे हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए पानी बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 हो रही है। सेम हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 3 हो रही है। यहां पर हमारे पास फिर उसके हमारे पास यहां पर होगा मीथेन, यहां पर हमारे पास है CH4 है, तो मीथेन के अंदर कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये जो 1, 2, 3 है हाइड्रोजन जितने लगे हमने, तो ये उनकी असल में वैलेंसी है। तो वैलेंसी से मुराद यही होता है कि एक एटम की वो सलाहियत जो दूसरे एटम के साथ मिलने के लिए चाहिए, वो उसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड भी खालिद हालत में खालिद चीज है। ये भी बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सब्सटेंस खालिस चीज है या एलिमेंट खालिस चीज है, ये भी खालिस है। बेसिकली ये 2 या 2 से ज्यादा खालिस एटम से मिलकर बनता है। तो जो एलिमेंट इसमें यूज होंगे बनने के लिए, इसके वजूद में आने के लिए इस्तेमाल होंगे, ये इसके अंदर उसकी कोई भी खूबसूरत नहीं पाई जाएगी, इसकी अपनी खास खूबसूरत होगी, यूनिक क्वालिटीज होंगी। जैसे मिसाल देता हूं, जो पानी है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन की अलग खासियत है, ये गैसियस उसमें है, ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मिलने के बाद एक नई चीज बनाते हैं जो कि पानी है, जिसकी अपनी खसूसियात हैं, तो ये अपने लिहाज से यूनिक है। इस तरह यानी कि कंपाउंड जो है ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को एक खास निस्बत से, इसमें रेशो लाजमी चीज है। दुनिया में जहां भी पानी की बात करेंगे वहां पर 2 निस्बत 1 लाजमी इस्तेमाल होगा। ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, जैसे C6H12O6 है, दुनिया के किसी भी ग्लूकोज को अगर आप ले लेंगे उसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, 12, 6, ये निस्बत सारा टोटली हर जगह पर रह जाएगी। तो इन चीजों को यानी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए एक खास रेशो की जरूरत होती है। तो ये इस तरीके से जब ये मिलेंगे तो जो नई प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर उसकी खास क्वालिटीज होंगी। बस आज के यही टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।